Students, in this class we shall study about a very interesting topic which is nitrogen cycle. Okay, so you are very well familiar with nitrogen gas, and there is some process, there is a phenomena which looks like a cycle, and we shall study about this nitrogen cycle in this class. Before that, let's talk about nitrogen gas. As you know that nitrogen gas is the most abundant gas in our atmosphere. In our atmosphere there is 78% nitrogen gas, right? And its molecular formula is N2, means each molecule of nitrogen has 2 atoms of nitrogen, its atomicity is 2. So in atmosphere nitrogen gas exists like this, so many N2 molecules. All right. So, can you tell me some uses of this nitrogen gas? Can you think about some uses of nitrogen gas? How nitrogen is useful for us, for plants and different animals? You can easily tell the uses of oxygen gas, but while you telling the uses of nitrogen, you might have to think. This is because nitrogen gas does not have any direct use. We do not use nitrogen gas directly. Okay, first we need to convert it in usable form, and then we take it, we use it. And you should know that in our body nitrogen is a part of proteins. Yes, proteins, which is an essential nutrient and which is made up of amino acids. Besides proteins, DNA, RNA, nucleic acids, right, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acids, and some vitamins, all these have nitrogen. All right, so a nitrogen is an essential life form for all kinds of organisms, either these are plants, animals or human beings. Then why we cannot use nitrogen directly? See, I give you an easy example of chocolates. Okay, you know that chocolates is made up of cocoa, right? But do you like cocoa? Can you eat cocoa? No. You need to convert it into chocolate, then you can eat it, you can taste it. Cocoa is very bitter, you cannot eat this, right? But when you convert it into some useful form like chocolate, cocoa powder, right, chocolate powder, then you can enjoy this. Similarly, nitrogen gas is also converted in usable forms which are nitrate and nitrite and ammonium ions, right? But why nitrogen cannot be used directly? Because the bond between two atoms of nitrogen gas is very strong. You will study in later higher classes that there are three kinds of bonds: single bond, double bond, triple bond, and there is triple bond between nitrogen atoms. That is why it is very difficult to break, and that is why this is very less reactive. It does not react easily, right? It does not produce chemical reactions easily. So to break this bond, to break this strong bond, some special things, some different things are required. Okay, so we shall study about that. So first, this nitrogen molecule is converted into nitrate, nitrite and ammonium ions, right? This process is called nitrogen fixation. फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि यूजेबल हो, ठीक है? नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, मतलब नाइट्रोजन में जो कमी थी, जो जिस वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, हमने उसको सही कर दिया, फिक्स कर दिया, उसको यूजेबल बना दिया. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. Okay, and how this is done? First, this bond needs to be broken, and it can be done by two methods. First simple method is lightning process. ठीक है, जब भी एटमॉस्फेयर में जब भी लाइट थंडरस्टॉर्म आता है, लाइटनिंग होती है, तो नाइट्रोजन गैस का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है इस तरीके से. ओके, उसके बाद वो नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन इनमें चेंज हो जाते हैं. ठीक है, and in this form they fall in on the earth, in the soil. Okay,
Another method is nitrogen fixing organisms, right? Nitrogen fixing organisms का मतलब होता है there are some microorganisms which fix nitrogen, means which convert nitrogen in its usable form. These organisms are ब्लू, आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, राइट? साइनोबैक्टीरिया इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी. So cyanobacteria and blue green algae are two microorganisms which change nitrogen into nitrate and nitrite ions, and these organisms are present in soil. Okay, so nitrogen fixation, converting an element into its usable form by these microorganisms. Okay, there is another method, there is a third method. You have studied about cyanobacteria, blue green algae. There is another bacteria which is called Rhizobium bacteria. Okay, Rhizobium bacteria is another bacteria that is present in leguminous plants, means the plants like pulses. ठीक है, जो दालों के पौधे होते हैं, जो दाल पल्सिस के प्लांट्स होते हैं, उनको हम लेज्यूम्स बोलते हैं. और ये लेज्यूमिनस प्लांट्स कि रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऑल राइट. सो आपने पढ़ा होगा कि पल्सिस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि पल्सिस का जो प्लांट है उसकी रूट्स में, जो लेज्यूमिनस प्लांट है उसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देते हैं. फिक्स करके वो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन बनाते हैं. और नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन बाद में जाकर प्रोटीन्स बनाते हैं. ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो पर्पज़ है, जो मेन यूज़ है, दैट इज़ मेकिंग प्रोटीन्स, राइट? फर्स्ट कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयंस एंड देन चेंजिंग इनटू them into proteins. Okay, so the main sources of proteins are plants. All right, so how do humans take nitrogen gas? First, they take it by plants. Okay, they take indirectly by plants. How do plants make proteins? They do this by, as you told you, bacteria. In pulses plants, in leguminous plants, those bacteria is rhizobium. Okay, and in soil, blue green algae and cyanobacteria are present. These bacteria fix nitrogen gas into usable form. By that usable form means nitrate, nitrate ions, proteins are made up, and those proteins are taken up by humans. All right. Okay, so I hope you have understood that how nitrogen gas is used. First, nitrogen is fixed. Nitrogen is converted into nitrate and nitrite ions. This is nitrate ion and that is nitrite ion and ammonium ion. Okay, nitrogen is fixed by two processes. First simple process is lightning process. Okay, lightning process. Okay, another method is bacterias. Okay, in soil, cyanobacteria and blue green algae are present. Okay, and in some special plants, leguminous plants, the roots of leguminous plants contain another bacteria which is rhizobium bacteria. Okay, that's how plants fix nitrogen and make up proteins. Okay, so usable forms, nitrogen fixing organisms, these are NO3 negative, NO2 negative. These are usable forms. These are converted into proteins. All right, and then these proteins are taken up by animals and plants. Okay, so now the question is, if we are using nitrogen, if we keep using nitrogen, then amount of nitrogen in atmosphere should reduce. अगर हम ऐसा नाइट्रोजन यूज करते रहे, प्लांट्स प्रोटीन्स बनाते रहे, हम लेते रहे, then in that case nitrogen will end one day. But this is not true. Why? If nitrogen, why does nitrogen do not get depleted? Why nitrogen does not get finished? Because this is answer to this question is nitrogen cycle. Means nitrogen is definitely used up by us
the atmospheric nitrogen definitely used by us, but then again this nitrogen gas is transferred back into atmosphere. This process is nitrogen cycle. Okay, you can understand that atmospheric nitrogen is taken up by living organisms, and then again this goes back into atmosphere. ऐसा कैसे होता है? So what is nitrogen cycle? Cyclic flow of atmospheric nitrogen to the living world and back into the atmosphere. Flow of atmospheric nitrogen to the living world and back into the atmosphere, that is atmospheric nitrogen cycle. So how does nitrogen get back टू द एटमॉस्फेयर? आपने ये पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है कुछ बैक्टीरिया से, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब फिक्स कर देते हैं, नाइट्रेट आयंस बनाते हैं, उससे प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, ये आपने पढ़ा है. जैसे एक ये लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्स का प्लांट है, और इसके अंदर जो रूट नोड्यूल्स हैं, रूट इन लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स मीन्स पल्सिस प्लांट्स, तो इन लेग्यूम्स की जो रूट्स हैं, रूट्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, नोड्यू. ठीक है, इन रूट नोड्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ऑल राइट, these bacteria, what do these bacteria do? These bacteria are converting them into NO2 negative, NO3 negative. Okay, and then proteins are being made up. When animals eat, this is an animal or human, it eats the plant. Now proteins come to this animal. When this animal dies, ठीक है, when this animal dies, then what happens? It gets decomposed, it gets mixed into the soil, it gets decomposed. All right, like this. And of course this decomposed matter, this decomposed animal matter has some left nitrogen compounds. इसके अंदर कोई नाइट्रोजन कंपाउंड्स बच गए. ठीक है, इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस से नाइट्रोजन में चेंज करने के लिए होते हैं कुछ अलग बैक्टीरिया, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, जिनको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच convert nitrogen compounds, means proteins, amino acids, back into the nitrogen gas, atmospheric nitrogen. Okay, these are denitrifying bacteria. So that is how nitrogen gas gets back into the atmosphere. Okay, so how did it start? It started with nitrogen fixation by bacteria, and then it ended with denitrifying bacteria back into the atmosphere. All right, so there are two processes, opposite processes. First is nitrogen fixing bacteria, another is denitrification, means denitrifying bacteria. इन दोनों का काम अपोजिट होता है. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो है नाइट्रेट आयंस, यूजेबल फॉर्म्स बनाते हैं, और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनसे वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनाते हैं. ओके, सो ये साइकिल है पूरी इस तरीके से. ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तीन तरीके से हो सकता है, लाइटनिंग हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, या फिर सॉइल के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उससे वो नाइट्रेट आयंस बनकर रूट्स में जाकर, प्लांट्स में जाकर अमीनो एसिड्स बनाते हैं. दोज आर टेकन बाय एनिमल्स. एनिमल्स डाई एंड देन डीकम्पोज्ड, एंड दैट डीकम्पोज सब्सटेंस इज used up by bacteria, denitrifying bacteria, and change it into atmospheric nitrogen gas. So that is how this cycle, nitrogen cycle, works. So this diagram is given in your NCERT book. If you, this is very easy, same thing that I have told you. So how does it starts? It starts with fixation of nitrogen like this. So atmospheric nitrogen is fixed by, fixing means, as I have told you, changing into usable form nitrate and nitrite ions, nitrogenous compounds. ठीक है, changing nitrogen into nitrogenous compounds is called fixation. So it is done by either lightning, ठीक है, lightning, or nitrogen fixing bacteria and blue green algae. ठीक है, by these two things, two methods, nitrogen is fixed and compounds of nitrogen reach into the soil. Finally जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं वो कहाँ जाते हैं? सॉइल के अंदर. ठीक है, दोज कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स.
Then those plants are eaten by animals, and when animals die, their nitrogenous waste, जो उनके अंदर nitrogenous waste होता है, ठीक है, that comes back into the soil, right? And from soil, as I have told you, there is another kind of bacteria called denitrifying bacteria. Those bacteria turn compounds of nitrogen into atmospheric nitrogen. Okay, so very simple thing. ठीक है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट दिस, दैट फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के कंपाउंड बन रहे हैं सॉइल के अंदर, उस सॉइल से प्लांट उसको ले रहे हैं, फिर एनिमल्स ले रहे हैं. व्हेन एनिमल्स डाई, द नाइट्रोजन कंपाउंड्स waste comes back to the soil, and some bacteria, denitrifying bacteria, convert those compounds back into the atmospheric nitrogen. So okay, so this is a class 8 diagram, very easy, very simple. This is another diagram of class 9th book. I will advise you कि आप 8th class वाला diagram यूज़ करें, that is easy simple. ये थोड़ा सा confusing हो सकता है आपके लिए, but ये भी easy है, उसमें भी वही सेम चीज़ है. तो इसमें फर्स्ट जो नीचे वाली जो लाइन है, इसमें जो नीचे वाली लाइन है ये, सो दिस लाइन इज़ अबाउट एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जो थंडरस्टॉर्म से होता है या इंडस्ट्रीज़ में होता है. सो फर्स्ट नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, then see nitrogen fixation by thunderstorm or bacterias. Okay, then plants take up protoplasm of green plants, means green plants में जो भी matter है, that is protoplasm. So green plants take that usable form and convert into amino acids, proteins. Okay, then those are eaten up by animals. Okay, after that when animals die, then the back process starts. मीन्स जो भी प्रोटीन्स थे, अमीनो एसिड्स थे, जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स थे, दोज देन स्टार्ट चेंजिंग इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड देन N2. ओके, सो प्रोसेस जो है क्या है, प्रोसेस ये है कि पहले नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव ये बनता है, फिर अमोनिया बनती है, फिर प्रोटीन्स बनते हैं, राइट. अमोनिया से पहले अमीनो एसिड्स बनते हैं, फिर प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन. और जब डीनाइट्रिफिकेशन होगा, मीन्स अपोजिट प्रोसेस होगी, तब क्या होगा, तब प्रोटीन्स से अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स से फिर अमोनिया, अमोनिया नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, और उसके बाद लास्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर वो पूरे प्रोसेस आ गई, बैक्टीरियाज, ओके, और जो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन है वो सब आ गया इसमें. उसके बाद these are taken up by plants, animals, okay, and after that during decomposition and by denitrifying bacteria, finally atmospheric nitrogen is formed. So this is nitrogen cycle. Okay, so rewind this video and revise this from your book and practice this, write about this in your notebook.